गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिल फॉर गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड भी टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी टॉपिक है, क्योंकि आपका पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, जिसमें नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी को गति शक्ति विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो परमिशन ली मांगी जा रही है। तो अब इसमें होगा क्या, पहले तो हम देखते हैं कि गति शक्ति फ्रेमवर्क है क्या। तो आपको पता है 2021 में अगस्त में इसको अनाउंस किया गया था। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज और रोडवेज जो है वो इकट्ठे आई हैं, ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसमें जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो वाले प्रोजेक्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको फैसिलिटेट करने का ये प्रोग्राम है। 100 लाख करोड़ तक के नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, और उसके अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस प्रोडक्शन के यूनिट्स, ये सब जो है बनाए जाएंगे बाय द ईयर 2024-25। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल नेटवर्किंग ग्रुप जो है वो, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट और ऑफिशियल्स मिलकर काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो इसको पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसके पिलर्स देखते हैं हम, 6 पिलर्स। तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के 6 पिलर्स हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब इतना बड़ा ये प्लान है 100 लाख करोड़ का, और एक सेंट्रलाइज पोर्टल से जो है इसको जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव्स इकट्ठे करके एक सेंट्रलाइज पोर्टल के अंदर डाल दिए गए हैं, ताकि सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो इसी से ही जो है इस पर नज़र रख सकें, विजिबिलिटी रख सकें इसी प्लेटफॉर्म के, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ये देख कर कि समझ लो सामने वाली मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट कौन सा है, और हमारा अगर प्रोजेक्ट उनको कॉम्प्लीमेंट करता है तो हम उसको पहले प्रायोरिटाइज कर देते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि अगर अलग अलग लेवल पर कोई भी प्रोजेक्ट, समझ लो कोई रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो रेलवे ब्रिज कोई बनाया जा रहा है बहुत बड़ा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो अगर उन्हें सामने दिख जाता है गति शक्ति जो है डैशबोर्ड पर, कि सामने जो है रोडवेज मिनिस्ट्री जो है वो वहाँ पर रोड बनाने की बात कर रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप उस डैशबोर्ड पर देख सकते हो। अगर आप अलग अलग काम कर रहे हो तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि पहले सड़क बन जाती है, फिर बाद में दोबारा ब्रिज बनता है, वो सड़क टूट जाती है, फिर सड़क दोबारा बनानी पड़ती है। तो इससे बेटर क्या होगा कि आप जब इकट्ठे मिलकर काम करोगे तो आप पहले ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो रिसोर्सेज की, कि आप पहले ब्रिज बना लोगे और फिर उसके बाद जो है वो रोड बनाई जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत छोटे लेवल पर आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है सिंक्रोनाइजेशन। मतलब अभी हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो जो है उसी को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी जो है ये सेंट्रल डेटाबेस काम आएगा। और एनालिटिकल में क्या है कि जीआईएस बेस्ड स्पेशल प्लानिंग की जाएगी। सारा डेटा जो है वो 200+ लेयर्स का जो डेटा है वो एनालिटिकल टूल्स में जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। डायनामिक कैसे है? सारी ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस जो है पीरियोडिक बेसिस पर जो है सारे प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर अवेलेबल होगी, कोई भी मॉनिटर कर सकता है इसको, और अपने जो है विजन को जो है वो इसी के बेसिस पर जो है बना सकता है। ठीक है। सो अब गति शक्ति विश्वविद्यालय को बनाया जा रहा है। अब क्रिटिकली नीडेड रिसर्च और डेवलपमेंट और जो टैलेंट होगा, वो जो गति शक्ति मास्टर प्लान में जो है वो हेल्प करेगा, वो इसी विश्वविद्यालय में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से लेके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स तक जो है उनको बढ़ाने के लिए जो है इस टैलेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमएमडीआर एक्ट। तो ये आपका इकोनॉमी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स टॉपिक। तो केरला गवर्नमेंट ने अपनी अपोजिशन की है अगेंस्ट द न्यू अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की हैं गवर्नमेंट ने इन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है। तो एमएमडीआर एक्ट जो है आपका 1957 का एक्ट है। माइनिंग सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंसेस देने के लिए फॉर माइनिंग। ठीक है। अब जो ये एमएमडीआर एक्ट है, इसके अंदर सारी माइनिंग की जो है लाइसेंसेस दी जाते हैं, एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स जैसे कि रिवर सैंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और इवन एटॉमिक मिनरल्स ऑल्सो। ठीक है। तो अब रिसेंटली भी इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। जैसे पहले 2015 से पहले क्या होता था
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है माइंस के जो है लाइसेंसेस दिए जाते थे, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद ऑक्शन को मैंडेटरी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी बनाया गया ताकि जो है स्टेट गवर्नमेंट जो जहाँ से पैसा जहाँ से माइनिंग की जा रही है वहाँ पर भी कुछ जो है पैसा लगाया जा सके। फिर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज भी इंट्रोड्यूस की गई फॉर इलीगल माइनिंग, और एक्ट को 2016 और 20 में भी जो है अमेंडमेंट किया गया ताकि जो है लीज ट्रांसफर की जा सके कैप्टिव माइंस की। कैप्टिव माइंस क्या होता है? जो आपके प्राइवेट यूज़ के लिए होती हैं। आप समझ लो आपने एक माइन खरीदी है, आप उसका कोल बाहर मार्केट में नहीं बेच रहे, उसमें से जो कोल निकल रहा है वो आप अपनी ही किसी इंडस्ट्री के लिए उसको यूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है। सो MMDR के 2021 में भी अमेंडमेंट हुई ताकि मिनरल सेक्टर को जो है वो रिवाइटलाइज किया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाई जा सके, और भी उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए गए। लेकिन अब ये आई एम सॉरी, जो ये अब न्यू अमेंडमेंट जो प्रपोज की जा रही हैं, इसमें क्या अमेंडमेंट्स में कहा जा रहा है और क्यों इसको जो है क्रिटिसिज्म किया जा रहा है? तो अब इसमें कहा गया है कि 8 ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स जो है वो पार्ट बी से निकाल के उसको पार्ट डी में डाला जा रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब क्या होता है कि जो पार्ट बी है उसमें उन मिनरल्स के ऊपर स्टेट्स गवर्नमेंट्स अपना लॉ बना सकती हैं, स्टेट की असेंबलीज जो है वो अपना लॉ बना सकती हैं, उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। अब इनको जब पार्ट डी में डाल दिया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के MMDR के, तो होगा क्या कि इन मिनरल्स के ऊपर ये आ जाएंगे कंकरेंट लिस्ट में। मतलब कंकरेंट लिस्ट में आने का मतलब ये हो जाएगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर जो है माइनिंग के लॉज बना सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो अपोजिशन की जा रही है। अब कहा जा रहा है क्रिटिक्स द्वारा कि जो ये 8 मिनरल्स हैं इनकी बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, अगर आप इनको प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो वो इम्प्रॉपर हैंडलिंग कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इशू यही है कि स्टेट असेंबलीज के पास अभी पावर है इन मिनरल्स के ऊपर लॉ बनाने का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाल देती है इसको, तो ये ब्रीच ऑफ स्टेट्स राइट होगा। और खासकर केरला जैसी स्टेट जहाँ पर ये बीच सैंड मिनरल्स, थोरियम, मोनेजाइट सैंड, ये सब तो वहाँ पर कोर मिनरल्स हैं, तो उनका जो है राइट जो है वो छिन जाएगा और वो यूनियन गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए केरला गवर्नमेंट खासकर इसको अपोज कर रही है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आपका साइंस एंड टेक से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है कहा जा रहा है कि अगस्त 7 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो है मेडन फ्लाइट जो है वो टेस्ट करने वाली है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो एक EOS-2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आज़ादी सैटेलाइट को कैरी करेगा जो स्पेस किड्स इंडिया ने बनाई है। तो SSLV की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि अभी क्या था कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमें PSLV जैसे बड़े जो है लॉन्च व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि जब PSLV का कोई बड़ा मिशन जाएगा तो उसके साथ ही हम पिगी बैक कर देंगे छोटी छोटी ये सैटेलाइट्स। उसके लिए हमको वेट करनी पड़ती थी छोटी सैटेलाइट्स को किसी बड़े मिशन के लिए। तो अभी क्या है कि हमारे पास छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बहुत से जो है कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो इसलिए हम जब ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं तो हमको PSLV की लॉन्च की वेट नहीं करनी पड़ेगी, और PSLV अपना बड़े मिशंस के ऊपर ऑटो जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान दे सकता है। तो SSLV जो है ये और जो है 500 किलो तक की जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, और ये एज़ कम्पेयर टू PSLV जो कि 1000 किलो तक की सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च कर सकता है, SSLV जो है वो 500 किलो तक की सैटेलाइट्स के लिए बना है। और अनलाइक PSLV या कोई और GSLV, इसको सिर्फ 72 घंटे लगते हैं इंटीग्रेट करने में। तो इसलिए ये स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बहुत जल्दी और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में किया जा सकता है। सो मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स को एक ही बार में लॉन्च करने के लिए SSLV बहुत ही परफेक्टली सूटेड है। तो हमारे स्पेस सेक्टर और प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री में अच्छी सिनर्जी क्रिएट कर देगा। जल्दी से जल्दी उनकी सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर पाएंगे, और इवन SSLV की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर भी जो है प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये आपका सोशल इशू का टॉपिक है। 500 पिग्स को रिसेंटली केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया बिकॉज अफ्रीकन स्वाइन फीवर वहाँ पर फैल रहा है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, बहुत ही कंटेजियस है, एक फेटल एनिमल डिजीज़ है। लगभग 100% जो है इसका मॉर्टेलिटी रेट है। पहली बार ये अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। ह्यूमंस को इससे ऑफकोर्स थ्रेट नहीं है कोई, लेकिन जो है एनिमल्स में इससे हेमोरेजिक फीवर होता है, और इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो है पिग्स को मारना ही पड़ता है अगर ये वायरस किसी भी एक लोकेशन में हमको देखने को मिले तो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेलफायर RNX मिसाइल। तो ये आपका सिक्योरिटी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है। तो US मिलिट्री ने, आपको पता है ना कि अभी अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को जो है वो मार दिया है।
तो हेलफायर R9X मिसाइल का यूज़ करते हुए उनको जो है मारा गया है। तो हेलफायर RNX मिसाइल है क्या? तो ये एक यूएस ओरिजिन का मिसाइल है। इससे मिनिमम कोलेटरल डैमेज होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी वॉरहेड नहीं होता। इसको निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। इसमें कोई वॉरहेड नहीं होता, रादर इसमें रेजर शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं। जब ये किसी टारगेट के पास जाता है तो ये अपने ब्लेड जो है उससे पॉप आउट हो जाते हैं और उस इंटेंडेड टारगेट को उस पर्सन को कट करके मार देते हैं। ठीक है, तो हेलफायर 9RX मिसाइल जो है जो है वो 2017 से यूएस में सर्व कर रहा है और ये हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है, ग्राउंड बेस्ड व्हीकल, स्मॉल शिप और इवन फास्ट मूविंग व्हीकल से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अब यूएस ने इसको ड्रोन से भी जो है वो लॉन्च करके दिखाया और जो है वो जवाहिरी को जो है वो मार दिया है। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया? लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थॉप ग्रूमैन नामक कंपनियों ने। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंपी स्किन डिसीज। तो अभी वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न राजस्थान में ये कैटल रेयर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं हैवी लॉसेस बिकॉज लंपी स्किन डिसीज वहाँ पर फैल रही है। तो ये टॉपिक भी आपका सोशल इशूज से भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लंपी स्किन डिसीज एक इन्फेक्शियस डिसीज है। पॉक्सविरिडे फैमिली के जो वायरस है उनसे होती है। इसमें को नीडलिंग वायरस कहते हैं जिससे डिसीज़ होती है। इसमें हाई फीवर हो जाता है और जो है स्वेलिंग हो जाती है लिम्स और इवन जो है एनिमल के या कैटल के जो है बॉडी में लेमनेस आ जाती है। और इस डिसीज़ से क्रॉनिक डिबिलिटी, कम मिल्क प्रोडक्शन, पुअर ग्रोथ, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन और इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्किन डिसीज़ जो है ये वहाँ पर वेस्टर्न और नॉर्दर्न राजस्थान में फैलती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is bill for Gati Shakti University. So this topic is important for your economy section, rather more specifically for your infrastructure section. So a bill has recently been introduced in the Lok Sabha which seeks to convert the National Rail and Transportation University into Gati Shakti Vishwavidyalay. Okay, so the idea is to convert this university into Gati Shakti Vishwavidyalay. Before understanding the relevance of this bill, we have to see what is PM Gati Shakti framework. So it's of course a digital platform which is bringing 16 ministries like railways and roadways together for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects. It was announced during the Independence Day a speech of Prime Minister Modi in August 2021, and it provides for integrated and seamless connectivity for movement of people, goods and services, and it also facilitates last mile connectivity of infrastructure. So the project is to have 100 lakh crore worth of infrastructure projects, which include 11 industrial corridors, defense production corridors, electronic manufacturing clusters, and even pharmaceutical clusters. And they all of them have almost fixed targets up to 2024 and 25. So who is implementing this framework? So a national networking group has been created which consists of experts and officials from all the stakeholder departments, and they are implementing this framework. So what are the 6 pillars of this PM Gati Shakti master plan? So first of course is the comprehensiveness. So you can see that it's 100 lakh crore worth infrastructure projects program. So it is being controlled through a single centralized portal, and all of the relevant departments have the visibility of each other's activities through this one centralized portal. So second is of course prioritization, because different departments can see what the other departments are doing, so they can prioritize their projects through the cross-sectoral interactions. The third one is of course optimization. Like I was giving you an example earlier, that if road department and railways department, they can coordinate with each other, they can prioritize their project accordingly. That will lead to optimum utilization of resources. Similarly, the synchronization has also been provided, because currently we operate in silos. We have little coordination. Once this PM Gati Shakti framework comes into picture, we will be having synchronization amongst the activities of each department. And the next one is analytical. So the entire database is available at a GIS based spatial planning, and it will have analytical tools for the assessment of the users, which are the government agencies. So it is providing an analytical framework for the users. So the next is dynamic, because all the
on-ground progress is periodically updated on this platform. So it helps the users, which are these government departments and ministries, to identify the vital interventions that they need to make at an appropriate time. Okay. So, what is the purpose of creating this Gati Shakti Vishwavidyalaya? So, of course, it has been felt that there is a need for talent in the strategically important and expanding transportation sector. For that, this university is being created, and it will also carry out critically needed research and development by creating innovative technologies. Okay. So the next topic is MMDR Act. So this topic is important for your economy section also. So Kerala government has recently expressed its displeasure over the Mines and Minerals Development and Regulation Act amendments, which have been proposed recently. So what is this MMDR Act? So it's an act of 1957 which regulates mining sector in India, and Ministry of Mines is responsible for the administration of this act. It describes the procedures for obtaining a mining or prospecting license in India. So this act is applicable to all the minerals except minor minerals like the river sand, which is of course under the purview of state governments, and also the atomic minerals. Okay, so it is not under the purview of MMDR Act. So there have been recent amendments in this MMDR Act also. So earlier, before of course 2015, we saw that there have been several scams also, because it was this mineral resources were granted on first come first served basis, which was discretionary, and decision making was very opaque. But in 2015, the government introduced an amendment and auction was made mandatory. Even District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust were created so that justice can be done to the local communities. Even stringent penalty was introduced for illegal mining. And this act was further amended in 2016 and 20 to allow lease of transfers of non-auctioned captive mines. So captive mines are those, of course, which are meant for the use by private agencies. And there was also another amendment in 2021 for promoting ease of doing business and revitalizing this entire mineral sector through structural reforms. So what has been proposed now? What are the new amendments which have been proposed? So government has proposed to separate 8 group of minerals out of the 12 group of minerals which are a part of part B of the first schedule of this MMDR Act. So what is happening is here is that these part B minerals are basically under the domain of state governments, but 8 out of 12 of these minerals will be moved to part D, and these part D would moving these minerals to part D would mean that they would come under the concurrent powers. Okay, so union government and state government both would have power to make regulations regarding these minerals. So this is why it is being opposed. So this will empower the union government, apart from the central government, apart from the state government, to sanction mining rights of these minerals, which have been mentioned under Part D of the first schedule. So this is why it is being criticized. So state governments are saying, especially the Kerala state, that these 8 minerals are of great strategic importance. If we put them under private sector's hands, it can lead to improper handling of these strategically important minerals. Also, as entry 23 of list 2 of article 246 of clause 3 of the Indian constitution, which means the union list and state list and concurrent list, it says that state assemblies can make laws on such minerals, especially Kerala, which is endowed with such highly rich resources like thorium and monazite sand. And once the rights to make the right to make regulations on these minerals would shift to concurrent list, it would mean that there would be a breach of states' rights. So this is why Kerala government is opposing these proposed amendments. So the next topic is small satellite launch vehicle. So this topic is important for your science and technology section. So ISRO is going to undertake the maiden flight of the newly developed small satellite launch vehicle on August 7th. So SSLV will carry India's Earth observation satellites too, and it will also carry Azadi Sat, which has been developed by Space Kids India. So what is the need of SSLV when we already have PSLV? So PSLV is meant for larger satellites, and SSLV is intended to take care of small satellites and putting them in the low Earth orbits. So what was happening here is that before SSLV, our small satellites had to wait for a polar satellite launch vehicle
to have a mission. Until that mission was made, these small satellites had to wait. And once this PSLV mission was launched, these small satellites were piggybacked down upon these polar satellite launch vehicle for the space launch. But now, once this SSLV gets ready, we do not need to remain dependent on PSLV launches. We can launch these small satellites into the low Earth orbit as and when they are ready. Okay, so it will save both the time and the cost also. So it's a three-stage launch vehicle, and it will be able to deliver these small satellites which weigh less than 500 kilogram in low Earth orbits. And it will only take 72 hours to integrate SSLV, unlike 70 days which are taken for a launch vehicle. So of course, what is the significance of it? Of course, it can launch multiple microsatellites at a single time, and will create greater synergy between space sector and private Indian industries, because the government is also contemplating that SSLV will be developed and manufactured by private industry also. Also, private industries also want to launch their satellites, so they do not need to wait further for a PSLV launch for getting their satellites installed in the space. So the next topic is African swine fever. So this topic is important for the social issues. So recently 500 pigs were killed in Kerala's Wayanad district because the government wants to prevent the spread of African swine fever, which was detected there. So why there was a need to kill all these pigs? Because it's a highly contagious virus. It is fatal. It has 100% mortality rate. It was first detected in Africa in 1920s. It's a double-stranded DNA virus of Asparvidae family, and it causes hemorrhagic fever in domestic and wild pigs. Currently, it is not a threat to human beings, but it leads to 100% mortality in animals. That is, pigs in this case. Okay. So the next topic is Hellfire R9X missile. So this topic is important for your security section. So the US military, you know that it has killed the Al Qaeda chief Al Zawahiri using this Hellfire R9X missile. So it is a US origin missile, and it is known to cause minimum collateral damage because it does not carry a warhead, and instead it uses razor sharp blades to kill the intended target. So once it reaches the target, these blades pop out of the missile and cut down the intended target. And it has been in active service since 2017, and it has been traditionally used from helicopters, ground-based vehicles, sometimes even from small ships and fast-moving vessels. But for the first time, the US has used it through drones, and it has shown the capability of using this missile through drones. It has been developed by Lockheed Martin and Northrop Grumman. Okay, so these are the companies which have developed such missiles. So the next topic is lumpy skin disease. So this topic also is important for your social issues. So in western and northern Rajasthan, cattle rearers are suffering heavy losses because this lumpy skin disease is spreading fast among bovines. So lumpy skin disease is an infectious disease. It is caused by a virus belonging to Poxviridae family, and this virus is known as needling virus. So this disease is characterized by fever. Many of the cattle develop swelling in their limbs, and they also exhibit lameness. It leads to chronic debility, reduced milk production, poor growth, infertility, abortion, and sometimes death also. So that's why this issue is occurring in Rajasthan, and the cattle rearers are suffering in the state. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.